अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। वीर शैव लिंगायत सेवा संघ थाने द्वारा विभिन्न सामाजिक मांगों के लिए अनंत गवली के नेतृत्व में सभापति मल्लेश शेट्टी को ज्ञापन दिया गया। कल्याण डुमरी महानगर पालिका क्षेत्र में हजारों की संख्या में शैव लिंगायत समाज के नागरिक रहते हैं। शैव समाज के नागरिकों के लिए सांस्कृतिक केंद्र रुद्रभूमि की मांग को लेकर शैव समाज का एक शिष्टमंडल जिसमें चंद्रकांत मनियाल, हेमंत देठे, वसवराज मालगी, सोन कुमार लचाने, प्रदीप नीलाखे, माधुरी चारुशीला पाटिल, प्रदीप नीलाखे के साथ संस्था के अन्य पदाधिकारी और सदस्य शामिल थे। अनंत गवली के नेतृत्व में सभापति मल्लेश शेट्टी से मिलकर अपनी मांगों का एक ज्ञापन संघ ने दिया है। इस संबंध में अनंत गवली ने पत्रकारों को जानकारी दी है। आज 20 तारीख दिनांक 20 रोजी आमचा वीर शैव समाज कल्याण यांच्यातर्फे आमच्या अध्यक्ष श्री लचाने साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे स्थायी समितीचे सभापती श्री मल्लेशजी शेट्टी यांच्या आमच्या विविध मागण्या मागण्या करण्यासाठी भेट घेतली व तसे आम्ही त्यांना निवेदन पण दिले। आमच्या समाजात मोठी अवघड परिस्थिती अशी आहे की आमच्यात मृत्यूनंतर दफन केले जाते। त्याच्यासाठी दफन भूमी कुठेही आम्हाला चांगल्या प्रमाणात विविध सोयी सुविधांनी उपलब्ध नाही आहे आणि मल्लेशजी शेट्टी यांना आमच्या समाजाच्या रीतिरिवाजाचं संपूर्ण ज्ञान आहे असल्यामुळे त्यांनी आम्हाला ठोस आश्वासन दिलं की मी तुमचा प्रश्न मार्गी लावेलच व या वर्षात 6 महिन्यात तुमची सर्व दफनभूमीची व्यवस्था डोंबिवली पूर्व, कल्याण पूर्व या ठिकाणी करून देईलच आणि त्याबरोबरच एक आमच्या बसव मंडप असं समाज मंदिर की बसवेश्वराचे तत्वज्ञान हे सगळीकडे पसरले पाहिजे, त्यासाठी समाज मंदिरासाठी ही जागा देण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले आहे आणि ते पूर्ण करतील अशी आमच्या समाजाला पूर्ण अपेक्षा आहे। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए हमारे अगले